भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तब हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने ये सवाल पूछना स्टार्ट किया, इसरो पर पैसा खर्च करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देश में इतनी गरीबी है, पहले उससे सॉल्व करो ना। स्पेस में जाने से भारत को क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे भारत की स्पेस जर्नी आप तक पहुंचाना काफी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, कोडिंग इन्वेडर्स। जैसे इसरो भारत को स्पेस के शिखर पर पहुंचाना चाहता है, कोडिंग इन्वेडर्स आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। डेटा एनालिस्ट ये एक काफी हाई डिमांड और हाई पेइंग जॉब बन चुका है, क्योंकि हमारी सारी दुनिया डेटा ड्रिवन बन गई है। चाहे वो ई कॉमर्स हो या मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी फील्ड, डेटा एनालिस्ट की जरूरत हर फील्ड में है। आप भी इस हाई डिमांड और हाई पेइंग वर्ल्ड का हिस्सा बन सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। अगर आपका बैकग्राउंड टेक में नहीं है या फिर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट कोर्स ऐसे ही लोगों के लिए बना है जो एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं। ये फ्रेशर्स के लिए भी है और उनके लिए भी जो अपने करंट जॉब स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम स्पेस की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन की ये इमेजेस आती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले यूएस सरकार चांद पर पहुंचा था। ह्यूमन सूटेड। हेलो। Welcome guys. Today we are going to watch the launch of Chandrayaan 3. So it's basically a podcast about भारत the launch of चंद्रयान Chandrayaan 3 3. लॉन्च करने जा रहा है I am reviewing this Abhiyan News Chandrayaan 3 launch explain why India wants to go to the moon. First we will see about Chandrayaan 3. It's around 615 crore. According to ISRO, the Chandrayaan 3 is built on a budget of around 615 crore. In a report from January 2020, ISRO chairman K. Sivam was quoted as saying that the lander rover and propulsion module for the mission would cost around rupees 250 crore, while the launch service would cost another rupees 365 crores. It has launched today at 2:43. It has sent into the orbit successfully. भारत चंद्रयान We 3 will लॉन्च see करने this जा रहा video है first. जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तब हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने ये सवाल पूछना स्टार्ट किया, इसरो पर पैसा खर्च करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देश में इतनी गरीबी है, पहले उससे सॉल्व करो ना। स्पेस में जाने से भारत को क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे भारत की स्पेस जर्नी आप तक पहुंचाना काफी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से स्पेस के नॉन टेक बैक असिस्टेंस बैच
27 कूपन को यूज किया इंपॉर्टेंट है। क्यों? चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर चांद पर पहुंचा था, लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात है और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप में। आपको पता ही होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे We can see now, whenever we see the image of moon, we only see its only one surface. I'll show you. Like in this image, you can see this round shape and this. In next image, here also we can see this part. So basically, from Earth, we can only see one side of the moon, only one part. बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन पानी। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप बन सकता है। चैप्टर 2, व्हाई दिस मिशन इज डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इंप्रूवमेंट्स क्या हुई? 5 पॉइंट्स है और सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाया और उसे एग्जैक्टली जहां पर लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर दूर जाकर गिरा। अब हमारे लैंडर की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम
टाइम उसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स के स्टडीज में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिससे हमारी अर्थ का डेटा रीड करके हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से है, और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ तक होने वाला है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 3, इसरो पैसों की बर्बादी है क्या? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून्स चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून्स यूएई के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या यूएई परफेक्ट है? भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद ये बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती। फिर वो ऐसा सवाल पूछते हैं कि इंडिया अफोर्ड अ स्पेस प्रोग्राम? चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर कितना खर्च करते हैं। इसरो के बजट्स पर सवाल आने वाले हैं, ये सतीश धवन सर को पता था। इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने तब वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे, और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी करता है। ये चार्ट देखिए, हम पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं। दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारे जीडीपी का सिर्फ 0.8% है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम हमारे पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ स्पेंड करते हैं। लेकिन इन पैसों में हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोग भेजता रहता है, वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता रहता है और धीरे धीरे अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुंचाते हैं। 10 से ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइना के नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही हमें टाइम रहते हुए वार्निंग्स दी। इन्हीं सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन की वजह से उड़ीसा से 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया। आज उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है और यूनाइटेड नेशंस भी दूसरे देशों को उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल सीखने की सलाह देता है। इसरो हमें हमारी ज्योग्राफी स्टडी करके डेटा देता है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स की जानकारी एडवांस में हमें मिलने से हम बेहतर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और होने वाला नुकसान कम कर सकते हैं। और ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इसरो फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए इन टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पर इतना विश्वास करती है, ये हमारे लिए गर्व की बात। स्पेस एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पे छुपे रेयर मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को एक बड़ा बूस्ट मिला है और इसरो कई स्पेस स्टार्टअप्स को एनकरेज और गाइड कर रहा है। क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज एक 13 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में ही 24 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल हमारे स्पेस बजट से 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं। और ये बात विक्रम साराभाई जानते थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जब नेहरू जी ने विक्रम साराभाई से कहा कि भारत एक गरीब देश, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साराभाई ने उन्हें कहा कि हम एक गरीब देश हैं, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है।
ये विजन ही है जो आज इसरो को नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें फॉलो करना ना भूलिए एंड मेक श्योर टू चेक आउट कोडिंग इन मेड। इस कूपन को यूज कीजिए और एडिशनल डिस्काउंट पाइए और जॉब असिस्टेंस बैच को ज्वाइन करके अपने करियर को एक टेक बूस्ट दीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन कभी भी मैं इसरो के किसी नए लॉन्च या फिर नए अचीवमेंट के बारे में सुनता हूँ तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि हर सक्सेस के हीरोज हमारे ये साइंटिस्ट हैं। ये वो लोग नहीं जिन्हें नासा ने रिजेक्ट किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि भारत में ब्यूरोक्रेसी है, बाधाएं हैं, बजट कम और प्रॉब्लम्स कई ज्यादा। हम वही भारत देश हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वही भारत देश हैं जिसके लिए स्काई एक लिमिट नहीं, एक सीढ़ी है, जिसके ऊपर चढ़कर हम आने वाला कल सुनहरा बना सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस Pretty वीडियो। much अगर discussed in आपको this ये वीडियो video अच्छा लगा तो वो the history, the launch, and its importance. Now we will see actual launch of this Chandrayan 3. Well, India's third lunar mission Chandrayan 3 is set to launch on Friday. It is a follow-up mission to the Chandrayan 2, which Chandrayan 3 launch. Ritu Karidhal Srivastava, scientist and a native of Lucknow, UP. MSc from Lucknow University in Mysore. Let me show you how I use Embarto elements to impress clients and take my video projects from ordinary to extraordinary. Indian Institute of Science, Bengaluru. She is an expert in aerospace and has been working with ISRO since 1997. Rocket Woman of India. Youngest Scientist Award. ISRO team and IS team. Society of India Aerospace Technology and Industries Aerospace Woman Award. We'll see about her. Ritu Karidhal Srivastava.
48 years age. Dr. Ritu Peridhar Srivastava is an Indian scientist working in the Indian Space Research Organisation. She was the Deputy Operations Director to India's Mars orbital mission, Mangalyaan. She has been referred to as one of the many rocket women of India. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर का एक प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये टेस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी को लेकर किया गया है। इसरो ने 19 फरवरी को बताया है कि ये परीक्षण बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच किया गया था। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने 23 अक्टूबर 2022 को बताया था कि चंद्रयान 3 लगभग तैयार है और साल 2023 के जून महीने में इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने Where can we see the actual video? Live. This is not live. Yeah, we can watch this. Hi, I am Ankush Singla, founder of Coding Ninja. In 9 months, we can train you to become a full stack web developer. We are joining you from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, the spaceport of India. The launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 is scheduled to take place today, the 14th of July 2023 at 14:30. मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. 200 will be grid in 10. On your TV screens, it is up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity. Pretty much proud work there. मिशन होने वाला है, पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। यादगार पल के लिए यहां सब उपस्थित। -1 minute.
MOV 79 open. Seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Boom. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of R2 tracking. LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based. इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन। And a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. Thank you. Congratulate to us, all of us. Great scientific satellite. People who have contributed. Now we will see some interviews about Chandrayaan-3. ISRO's Chief S. Somnath, Chandrayaan-3. They are not in flow because their app is badly put together. But I'll just tell you. So first, like many people want to know, during Chandrayaan-2, the fifth engine was added to prevent dust blowback in its final descent phase. Now it's removed again. So this dust blowback issue, how is it being handled now? We found later many tests were done to see this dust issue, and we are very clear now about the dust issue that after our scale down model simulation test, etc., the dust will not cause a big problem if the engine shut off is happening as much as we planned. The current arrangement is immediately on touchdown, soft landing, immediately the engines will shut down. The moon alone is not the only scientific mission that we are working on. Right. Is it fair to say that to an extent, Lupex approval?
A very warm welcome to all our viewers to this Times Network special. I'm Deepak Bopana and with me is my colleague Dharni Balasubramaniam. Today joining us is a guest who's one of the most brilliant minds in the country. Now he at this point in time is shouldering the hopes and aspirations of 1 billion Indians. Well, more importantly of course, he's now planning to, write a new chapter in Indian space odyssey. We have none other than Mr. Somnath, the chairman of ISRO, joining us. Thank you so much for joining us today, sir. It's a big event that's coming up, the launch of Chandrayan 3. Of course, we're going to be talking in detail about that. But how's the mood right now at ISRO? And how's your mood? I'm sure, you have a lot of meetings that have been lined up, a lot of preparation to do. Just walk us through this, because according to me, it's probably a cricket match or a World Cup final where, the entire country is waiting with bated breath to see this succeed. And the same thing is happening this time around. How do you really feel? How are you dealing with this pressure? See, today there is no pressure for us. We are working the way we used to work for launches. We build rockets, we launch them regularly. This year we had 4 launches already. And the Chandrayan 3 preparations are going on very well. The LVM-3 is ready and it's at the launch pad undergoing final testing processes. You also know that at the same time we are also preparing another rocket PSLV for launch immediately following it. And there are other preparations for subsequent launches as well. So it is a professional work that is happening in ISRO, building rockets and satellites and launching. But as you already said, that there is a high mood of expectation of all the people for this mission specifically. And we have taken all due care and Chairman of Indian Space Research Organization, and all things that we can do to make this mission a grand one. And we are hoping for the best. He's an Indian aerospace engineer servicing as the chairman of Indian Space Research Organization. Of course, my colleague joining us from Chennai, she's been, tracking all the movements happening at Sriharikota and much more. I travel frequently to Sriharikota. Go ahead. Sir, it's very fascinating to know that we are traveling over 380,000 kilometers for a third time. And it's a dream project not only for the ISRO but for the whole country. So if you could give us some insight into the goals and objectives of Chandrayan 3, what you're working on, that will be helpful. Chandrayan 3 has a similar goal as that of Chandrayan 2, with some small variations in terms of the scientific objectives that we want to do. Last time in the Chandrayan 2 we could not achieve the soft landing, and hence the lander and the rover, where the scientific experiments were incorporated, could not be accomplished. So this time what we are doing is those missions, those part of the mission is the focus, achieve the soft landing. Then after the soft landing, rover and lander will do the scientific experiments, send the data to us. So that's the primary objective. So and the orbital part, which was launched last time, is still working very well, the Chandrayan 2, and has provided information, scientific data, which is actually being used by scientists all over. So, but I must ask you, of course, you must have been asked this question multiple times. After the failure last time, it must have not been easy on the scientists at ISRO. And, they say space is unforgiving and the margin for error is almost nil. How do you really bounce back from a situation like that? And what have you really learned from, the lessons that you've learned from that? Failures are always difficult. As you know, there are a lot of questions asked whether did you do it properly, there were any any errors that could have been avoided, your understanding level, was it proper at that point in time. All these questions do come. And unlike any other accidents that happen on a terrestrial situation, the hard landing on moon leaves no proof to us immediately, but of course we can reconstruct through the orbital data and second part of the journey. The first part is establishing what went wrong, second part is what can go wrong and how do we really do this modification, and then do the modification. Then final part is test it to a perfection, to a level that we have not done before. So all this happened in the last two years plus, and we made the next craft, the lander, the orbiter and the rover again. Except with that orbiter part is slightly different without the scientific experiments on board. And the rover also went through a series of testing, simulations to a higher level of dispersion handling capability, and we are there now with the Chandrayan 3 on board LVM-3. So it has been a very, very tough journey for the entire team of Chandrayan 3 project. They went through very rigorous, unforgiving lessons in their life, answering so many questions and reviews, etc. And I am very sure that through that process they would have become stronger. You have to be a master, isn't it? Because you have to tell them that there is no room for error.
See, we always tell this because the space, as you mentioned, the crux of the problem is that there are thousands of things happening in it, and there are so many variables that are there, and your ability to foresee a priori and design it with very low margin is the art. So we don't have very high margin like terrestrial structures or systems, but in space we need to keep the margins very low so as to save mass, and it has to handle uncertainty. So when I came to US, I was very new to English as well as American English. I used to write uncertainties beyond those margins. So this is a tough job. So you'll have to predict how much things can go beyond our expected boundaries and how to take care of it. So this is the art at which we are perfected now. There were certain level of boundaries that we designed last time. Now this time we have to expand the boundary. And when you expand boundary, it has its own implications like increased mass, increased power, increased overheads. So we have to handle that with the available capability of the rocket. So this is the thing that we did. Sir, in terms of the build and the technical capabilities, how different is Chandrayaan 3 from Chandrayaan 2? And also talking about the landing spot, which spot in Moon are we planning to land, and why did we choose that spot? What is the reason behind choosing that spot? You on your first part of the question related to the change from Chandrayaan 2 to Chandrayaan 3, essentially the same three constituent elements of the Chandrayaan 3, like the orbiter, which is now called the propulsion module, the lander, and the rover, are still there. The orbiter part is not having any significant payloads like last time. Its primary job being take the lander and the rover to a 100-kilometer orbit around the moon after the injection to the Earth orbit. This time the propulsion module is not improved. It is we removed the payload elements and it is given task only to do the function of reaching it up to the moon. And the second part is the lander is now heavier by almost 200 kilogram plus. What we did is there are many more changes done in the lander, primarily to handle higher velocities of landing. Then it has more energy generating capability like solar power capability. It has more propellant to handle dispersions and propulsion uncertainties. It has new sensors which will take care of the sensor failures if at all it happens. It has new algorithms and software sitting there which are made wider to handle. Its control and guidance algorithms and softwares have been modified and capable of handling multiple paths of travel to reach the land, etc., etc. So essentially these are the changes. The scientific part of the experiment, the payloads on board lander and rover are one and the same. Landing spot is also almost the same because it is almost 70 degrees to the south pole, and this location has been selected last time also, where there is sufficient illumination of the sun, but it is closer to the south pole where you have more scientific interest, because the equatorial region, which is very safe for landing, which is enough solar power and the risks are lower, has already been surveyed and a lot of scientific data is already available. So if at all we have to make a very significant scientific outcome out of this mission, it is better to go to the pole. And that's why we selected a place closer to the pole, but it has higher risks of landing safely. But then of course we have tried last time, so we didn't want to make a change at this time, and this has been well studied. And mind you, I want to tell you that we have now the Chandrayaan 2 orbiter still there, and it is providing enough data, like the very high resolution images of the moon where we are likely to land are already available with us, and this data has been well studied, and we have incorporated a lot of inputs from Chandrayaan 2 into Chandrayaan 3 on this part of the landing site, how good it is, how many boulders or craters are there, and we have widened the domain of landing for better possibility of landing. So now the Russians, the Americans, the Chinese, they've all carried out lunar missions. How different is India's lunar mission? This particular Chandrayaan, what are we looking to study? What are the kind of intel that we'll gather from this? Share this insight with our viewers. See, moon has been well studied. I think the astronauts from US have gone many times to moon and collected samples and brought there. Russians have not gone physically, but they have sent robots there, and other nations also did. But mind you, our Chandrayaan 1 discovered the presence of water molecules on the moon. So if you ask this question, what you are going to find new, there is always an element of surprise in this. So what you can find is always dependent on how good your instruments are, how good your ability to detect new scientific findings are. So, and we have identified a specific scientific objective in the mission which has not been done before. So that is our interest.
And more importantly, there is an increased interest in moon from everybody, even now, even after it has been explored. So the extent of exploration that others have done are limited. Let us understand that. Because some few missions to moon doesn't mean that you understood everything about the moon. So there is still significant scientific interest on moon. So this time we are looking at specifically on the regolith. The physical characteristic of the moon surface is what we are focusing on. And very close to that surface, the atmosphere, the characteristic of the atmosphere. And we are also looking into the tectonic activity. That is like we have a very sensitive acceleration measurement system which will measure one of the best. Did you know that there's an endless supply of free electricity constantly flowing in the ground beneath you? For engines or a propulsion model. Is that is not there, the capability is not there. You also realize that R&D ecosystem in industry has been one of the whatever we have created over the past in terms of technology facility for you to do that function. So we have to create markets for them. It is not simply doing some launches for government. We have to find a market for them. We must make them cost effective so that it survives over a period of time. And then we must also make sure that it is not done for India alone, it is done for global market. Then only there will be a possibility of making huge profitability. We are also telling them that don't limit to launch rocket and satellite, but also look at the downstream full work. The economy of this scale is working in terms of delivering end-to-end services. Otherwise, there will be no customers and profitability. We are also looking at innovative work done by them, which is different from ISRO. ISRO has been doing the work in one manner, but there are people who are able to do it in a totally different way, which is surpasses our thinking processes. So we have to encourage that process so that they beat others in terms of the new ideas and opportunities. So there are many things happening now, and we are creating a framework of work condition here. So their work is recognized. They are taken to the podium and congratulated. They were given opportunity to do that. They will not be stopped, prevented from doing anything innovative, and further that ISRO becomes the hand-holding brother, not as a boss. Well, sir, this has been a very intriguing, conversation with you. Thank you for, sharing all of these details and giving us your time. And like I said, the hopes and aspirations of a billion Indians are with you. And let's hope that at the end of August, there's good news for all of us Indians. Thank you so much. Thank you so much. Well, the chairman, of course, has shared a lot of insight into how the Chandrayaan 3 is going to be, how is it going to really work in space, and all those details, of course, have been shared. But what about the other projects lined up for ISRO and, of course, private players? That's about the Chandrayaan 3, guys. As you can see, there is big hype in India about this, and it will take 42 days to settle on the moon surface. Hope we will get successful this time. Let's check the updates of Chandrayaan 3. Scheduled for Friday, July 14 at 2:35 p.m., Chandrayaan 3 will be launched on Launch Vehicle Mark 3 rocket from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota in Andhra Pradesh. So it was from Sriharikota, Andhra Pradesh. ISRO will be live streaming the launch as we have seen on its official website, YouTube channel and Doordarshan channel starting from 2 p.m. Chandrayaan 3 is the third lunar exploration mission by the Indian Space Research Organization. It consists of a lander and a rover similar to Chandrayaan 2 but does not have an orbiter. Its propulsion module behaves like a communication relay satellite. Launch mass 3,900 kg spacecraft component rover power propulsion module, SIM-5W lander module,
738 WWS with bias rover 50 back. Bus Chandrayan manufacturer Indian Space Research Organization (ISRO). We will check the updates. "16 minutes after lift-off, propulsion module successfully separated from the rocket and would orbit the Earth about 5-6 times in elliptical cycle, with 170 km closest and 36,500 km farthest from the Earth, moving towards the lunar orbit. To witness the event live, you can watch the streaming of the launch of ISRO's official website, YouTube channel. Check all the updates. Applaud, cheers, sweep through ISRO, watch video. Now we will see how Chandrayaan 3 will work. चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन होगा। इस मिशन में इसरो मून पर एक रोवर और लैंडर पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट करेगा। प्रीवियसली चंद्रयान 2 में ऑलरेडी एक ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में प्लेस किया जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार रोवर और लैंडर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, जो कि इसरो इस बार अटेम्प्ट करेगा। इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसरो का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट है। लैंडर के ऊपर अलग अलग तरह के सेंसर्स और ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से चांद की सरफेस के ऊपर थर्मल प्रॉपर्टी, सिस्मिक एक्टिविटी के साथ साथ सरफेस प्लाज्मा को टेस्ट किया जाएगा। रोवर अलग अलग लोकेशन पर जाकर के एलिमेंट को टेस्ट कर सकेगा। इसकी लाइफ 1 लूनर डे या फिर अर्थ के 14 दिन के बराबर होगी। और सबसे खास बात तो यह है कि इससे इसरो फ्यूचर के मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएगा। एक्सपेक्टेड है कि इसे 12 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान That's it, guys. All the best to Chandrayaan 3 in India. And we will be signing off now. We will see ISRO's official post about it, and then we will sign off for today.
Chandrayaan 3 mission for week is successfully launched. So we'll sign off now. सत्यमेव जयते.